Hello friends. So welcome to my channel Gandhi Sir. So today now we talk about next गुरु मंत्र. पिछली वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे गुरु मंत्र सिखाए थे जो आप रूटीन के अंदर बोल सकें. अगर किसी का मिस हो गया तो आप प्रीवियस वीडियो दे सके हैं. आज का मेरा सेकंड चैप्टर है. जैसे कि एज प्रॉमिस्ड 108 गुरु मंत्र हैं जिसके अंदर आज मैं फिर 7 जो हैं आज डिस्कस करूंगा और अगले फिर आपको डिस्कस होते रहेंगे. So keep in touch with me, and I mean it that once you have all these Guru Mantra in your life, you can speak in day to day very effectively. ये students spoken वालों के लिए, IELTS वालों के लिए, PT, general students के लिए, सबके लिए ये effective है. How to speak effective English. अब हम पहले बात करते हैं. अगर आपको रूटीन के अंदर अगर बोलना हो आपको, रूटीन के अंदर हम बोलते हैं यार छड़ परे. रूटीन के अंदर हम बोलते हैं छड़ परे यार की पे नाच कर नाच. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट छड़ परे, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ इट? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, या सिंपली ये भी कह सकते हैं लेट इट बी छड़ परे. सो दिस इज द फर्स्ट. नाउ व्हाट इज द सेकंड वन? दिस इज यूजुअली अगेन वी स्पीक. जब हम कहते हैं कि मोस्टली हम कहते हैं यार वो सनकी है, या फिर उसका दिमाग नहीं चल रहा, या फिर हमने कहना हो यार पागल हो गया. सो दिस इज इन वी स्पीक इन यूजुअली विद द फ्रेंड्स. देन व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ इट? देन वी यूजुअली स्पीक ही इज आउट ऑफ माइंड. मीन्स ही इज आउट ऑफ माइंड. उसको पता नहीं लग रहा वो क्या बोल रहा है. दैट्स द इंग्लिश ऑफ इट. ही इज आउट ऑफ माइंड. अब सुनिए थर्ड वन. व्हाट इज द थर्ड वन? हम कहते हैं निकम्मा है यार वो मुंडा. So when we say nikamma or munda, what is the English of it? So we usually speak, he is good for nothing. He is good for nothing. So this is, you speak at that time. Fourth one. So what is fourth? So when we need to speak about, yaar main majboor haan. When we speak main majboor haan, then we speak I am helpless. I am helpless. So this is again, you need to speak at the time of when you have nothing to say. So you are helpless. It means the person is helpless. चलिए अगली बात करें. अगला है फिफ्थ वन. ये हम कहते हैं कि अगर हमारे घर कोई आ जाए तो यूजुअली वी स्पीक आप क्या लेंगे, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे. और मोस्टली द स्टूडेंट्स दे स्पीक व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू टेक. Right? Exactly. The perfect line is to speak here. It's common and you usually find it everywhere where you need it. देखिए, what would you like to have? Some tea or coffee? What would you like to have? Some tea or coffee? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं. Would you like to take some coffee or tea? Would you like to take some coffee or tea? जब हम चाय या कॉफी पूछते हैं सम जरूर लगाना है. नेक्स्ट वन. अगर आपको घर पे ये बात करनी हो कि मम्मा बिस्तरा बिछा दो, या पापा से बात करनी हो, ब्रदर सिस्टर से बात करनी हो, तो हाउ वी स्पीक द लाइन? सिंपली वी से कैन यू प्लीज मेक अ बेड, कुड यू प्लीज मेक अ बेड, मेक अ बेड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट. लास्ट मंत्र बट नॉट द लीस्ट, वेरी इफेक्टिव. अगर आपको बोला है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बंदे को चक्कर आ रहे हैं, तो अगर उसको चक्कर आ रहे हैं देन व्हाट वी स्पीक अबाउट? ही इज फीलिंग गिडी, शी इज फीलिंग गिडी. इट मीन्स दैट व्हेन यू डू नॉट फील गुड, राइट, वी यूजुअली स्पीक द वर्ड आई एम नॉट ओके. सो डू नॉट स्पीक दिस लाइन. सो बेटर इफ यू हैव दिस फीलिंग ऑफ chakkar ana, then you speak I am feeling giddy. Hope you have liked today's video. Of course, next video I will again tell you some more mantra. Share and subscribe my channel for learning more. Take care. Bye bye.